Morning has already passed away, and there is still no sign of open defecation having taken place in this vast vacant plot at Arjunnagar. Where have the open defecators gone? Oh, they don't defecate in the open anymore. Be it Rajesh Kumar, be it this little Munni, or be it Lakshmi ji, everyone here now uses their own toilets. खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल होगा, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत. Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, is known as the City of Lakes. This large city is spread across 287 square kilometers with nearly 18 lakh people today. Like other cities with rapid growth, slums have grown here too. Every third person of Bhopal lives in the 380 slums spread across the city. According to the 2011 census, 20% of all the households in the city lacked individual household toilets. Most of these households were located in slums. In 2008, AARAMBH, an NGO in the city, and Water Aid, which is an international donor agency, came together for this community-driven initiative, which they called AARAMBH. At the outset, AARAMBH began working with 17 slums in the city that had the poorest sanitation conditions amongst all the slums. UN Habitat and Water Aid both just decided to have that kind of giving a clear picture of the city, that how many slums existed in Bhopal city. Update was not there in 2005-06. So we decided at least we should go for the survey of each and every slums in Bhopal city. All the slums are not having the same situations, because some slums they are having good facilities of water, some slums they don't have the water facilities, some slums are totally filled the area. So we come out with all the details of each and every slums. Then we decided to prioritize all the slums that who is coming under the 3x3 matrix area. 3x3 matrix means which is coming under the total non-access to water facilities, non-access to sanitation facilities, and total unhygienic area. So then we decided that we will start our work in that particular area which is really lacking of all three facilities. 2007 and 8, 9, 3 years, we tried piloting in 17 slums of Bhopal city. And within 3 years, all these slums were declared open defecation free, just because the motivations that these people were. What is unique about this initiative is that AARAMBH only plays the role of a facilitator, and assistance to build the toilet is provided to only select households in the slum. The assistance includes cash money, which is given directly to the beneficiary, and toilet construction material, the components of which are as follows: bricks, cement, sand, aggregates, farshi, seat and P-trap, murga and pipe. It was thought that even with bamboos and tin sheets, a decent fully covered toilet superstructure could be made. Money is saved because under this initiative, the beneficiaries would be building the toilets themselves. For this, they were given requisite masonry training in this too. Then we also initiated some programs to give some mason training there, so that if you are engaging some person and you have to give 100 or 200 rupees for the construction job and all, so that money you can also able to save, and why not you can use this money for your bathing space. Maybe you can just have some good looking toilets there. So this money can be utilized for some other purpose, and really it really triggered to them. But toilet construction per se is just a relatively smaller aspect of the AARAMBH initiative. The larger aspect of the initiative was to trigger a change within the community so as to make the toilet into an aspirational commodity.
The methodology of AARAMBH's intervention in each slum can be broadly put into the following 5 steps. 1. A baseline survey of each and every household in the slum. 2. Identification of a community leader, which they call WASH leader, and training them for community activities. 3. Community involvement and awareness activities. 4. Identification of those households who would be helped with the funding and construction materials. 5. Construction of the toilets and their monitoring. शहरी गरीब में हस्तक्षेप को लेकर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले उस बस्ती की, उस गरीबी क्षेत्र की, पॉकेट की हम स्थिति का पता करते हैं और स्थिति को पता करने के विभिन्न टूल होते हैं। आरएम का प्रयास ये रहा है कि समुदाय को उस सर्विस के काम में जोड़ा जाए और समुदाय की भागीदारी को जोड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले समुदाय से चर्चा करते हैं, वहाँ की समुदाय की बैठक को करते हैं। बैठक के साथ में देखते हैं कि वहाँ बस्ती का पूरा ट्रांजेक्ट वर्क पूरी बस्ती में करते हैं, हर एक लेन को, हर एक गली में विजिट किया जाता है। फिर फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं सर्वे को लेकर, हाउस होल्ड लेवल पर क्या स्थिति है तो हाउस होल्ड सर्वे फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं। तो घर के स्तर पर पानी को लेकर क्या स्थिति है, शौचालय को लेकर क्या स्थिति है, स्वच्छता को लेकर स्थिति क्या है, और पानी, शौचालय, स्वच्छता की स्थिति अगर नहीं है तो फिर उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर कितना पड़ता है, तो उसका भी हम लोग अवलोकन करते हैं, जानकारी लेते हैं, डाटा का संग्रहण करते हैं। तो हाउस होल्ड लेवल पर इस तरीके की जानकारी एकत्रित करने के पश्चात समुदाय की भागीदारी को उस सर्वे में जोड़ा जाता है और उसके लिए हम PRA एक्सरसाइज को वहाँ पर क्रियान्वित करते हैं। उसमें बस्ती के प्रत्येक गली के लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं, बस्ती पर मैप बनाते हैं, हर एक डाटा लिया जाता है कि किसके घर में शौचालय है, किसके घर में नहीं है, उसको अलग अलग कलर से इंडिकेट करते हैं। वो परिवार के लोग खुद स्वयं ही अपने आप से उस PRA एक्सरसाइज में आगे आके आ रहते हैं। खुद बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सबकी भागीदारी उस टूल में आगे आ पाती है और इससे ये निकल कर आता है कि हर एक व्यक्ति रुचि के साथ में एक इंटरेस्ट, किसी भी डाटा को संग्रहण करने से पहले रुचि का होना बहुत ज़रूरी है। तो समुदाय की रुचि पैदा करने के लिए हम वहाँ पर PRA एक्सरसाइज को करते हैं, कुछ गेम भी करते हैं, खेल भी खेलते हैं बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में भी कुछ खेल समुदाय आधारित खेलते हैं, जिसके माध्यम से महिलाओं की भागीदारी उस डाटा संग्रहण को लेकर, बस्ती की जानकारी एकत्रित करने के लिए और आपसी संबंध स्थापित करने के लिए समुदाय के बीच में और एक संस्था के बीच में। The community leaders are key to the AARAMBH initiative since they are trained to act as the messengers of the sanitation drive in the community. And for this, they are trained by AARAMBH. Post-selection, they are designated with the title of WASH leaders. WASH stands for Water, Sanitation and Hygiene. वहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने सोचा कि बार बार आना और बैठकें करना और मीटिंगें करने से तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए जो हर गली से एक एक व्यक्ति हो। तो उन लोगों ने एक बस्ती विकास समिति का निर्माण करना चाहा। A WASH leader was identified for every slum under this initiative. They were trained to educate all the slum households about the importance of safe sanitary practices. Participation of women leaders is especially prioritized as WASH leaders. They also coordinate material supply for construction of the toilets and also monitor the entire process. These WASH leaders are also given IEC material for this, where they also explain the toilet technology for people to understand it properly. The WASH leaders also help in the identification of beneficiaries and in coordinating construction of the toilets. When the initiative started, only 20 to 25 of all the 400 households had toilets in Arjun Nagar slum. But with limited funding under this initiative, the most needy had to be identified for toilet construction assistance. With a strong baseline household survey, 85 households amongst the 400 households in Arjun Nagar were systematically selected, identifying the most needy by prioritizing households with lowest income level, with adolescent girls, and those with senior citizens. Digging their own pits and building the toilets themselves has a sense of attachment and ownership, and they are thoroughly involved in its caretaking. Over the past 8 years, with rising incomes, the residents have also improved the condition of their toilets, along with their houses.
Today, everyone in Arjun Nagar slum uses their toilets. But this initiative had its own set of challenges. People had this notion that having toilets so close to their kitchens and living room would generate foul smell. बहुत लोग बोलते थे कि गड्ढा नहीं खोदेंगे, इसमें से बदबू आएगी, कैसे खाना खाएंगे हम लोग. This had to be tackled only by educating the people about the safety of these toilets. People were also not ready to dig these pits initially. They have to work first. What is the money they will get? Then they will invest that money for their other 2 times meals and all. जब मैंने लोगों को कहा कि भाई देखो शौचालय बहुत ज़रूरी है और शौचालय बनाना है और देखो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो लोगों ने जब मुझसे कहा आपके घर में है, तो मैंने कहा नहीं मेरे घर में भी नहीं है. फिर मेरे को लगा नहीं मेरे घर में भी होना चाहिए यार, जब मैं खुद के घर में होगा तो मैं लोगों को समझा पाऊंगी. तो फिर मैंने तुरंत मेरे हस्बैंड से कहा, मेरे हस्बैंड ने बाइक के लिए पैसा इकट्ठा किया था. मैंने बोला मुझे बाइक नहीं चाहिए, अब टॉयलेट चाहिए. बस मेरा आधा घर टीन का है और आधा घर सीमेंट का है, पर मेरे घर में टॉयलेट है. It was finally when the wash leader herself dug the pit for the toilet and got it built. People realized that there was no such thing as a foul smell and also took up the construction. Looking at the facility, their neighbors of the beneficiaries who got assistance for toilet construction also built the toilets. 80-85 जब बन चुके तो लोगों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा आया कि 70-80 घर में दे दिया, यहाँ पर 400 लोग हैं, 400 घर था, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आया कि हम कैसे करेंगे, इनने 80 लोगों को ही बनवाया है, 85 लोगों को ही बनवाया है, तो हम क्या हमारे पास पैसे नहीं हैं. तो कुछ लोग गुस्से में भी बनवा लिए और गुस्से के बनवाने के बाद फिर एक दूसरे को देखकर बनवा लिए. जिनको देखकर हमने प्रेरित होकर के हमारे घर में खुद के पैसे इकट्ठे करके शौचालय बनवाए हैं. पहले हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं था, बहुत ही परेशानी थी. पहले छोटी छोटी बच्चियाँ थी, बाहर जाने के लिए फिर बारिश के टाइम में इतनी दिक्कत आती थी हमें, तो मतलब टॉयलेट जाने के बहाने से मतलब रात में पहले कम खाना खाना, कोई ज़्यादा नहीं परेशानी होना चाहिए. आरएम संस्था से सब सुनने के बाद हमने ये विचार किया कि हमें मतलब पैसे से कोई लेना देना नहीं है. पहले तो हम अपने घर में सुरक्षा देखेंगे, अपनी बेटियों को अंदर ही सबकी सुविधा हो जाए, बाहर बुरे नज़रों से बच जाए और अपन भी खुद बच जाए. और इससे हमने सोचा कि हम कुछ घर में लग जाए तो भला 2 खर्चा थोड़ा कम कर देंगे और घर में शौचालय बनाएंगे. फिर हमने थोड़े से बचत कर करके हमने शौचालय घर में ही बना लिया. The initiative turned out to be very successful, and so it was replicated to a total of 48 slums in Bhopal, all of which have toilet coverage between 90% to 100%, and all of them are open defecation free today. Our overall idea is also to demonstrate, to build the capacity of ULB, to sensitize the urban local body. They understand the importance of community participation so that they can be replicated in the other slums as well. And so with this initiative in the Arjun Nagar, we were able to demonstrate that with the community participation, you can, with the little facilitation support, you can achieve a greater role. Secondly, if communities participated in a nice way, in a like represented way, and when they have the ownership, the services can be sustained for a longer time. तो टॉयलेट निर्माण होने के बाद फिर अचानक खबर आई मेरे ससुर की कि इनको पैरालिस हो गया. फिर मेरी सास ने पूछा, उनको नहीं पता था मेरे घर में टॉयलेट है. बोलते हैं मैं वहाँ आऊँगी ना बेटा तो मुझे परेशानी हो जाएगी, टॉयलेट तो है नहीं. उनकी अम्मी आ जाओ, मैंने टॉयलेट बना लिया. वो बड़ी खुशी के साथ यहाँ आए और कहाँ वो 2 महीने रहने वाले मेरे यहाँ 8 महीने रहकर गए. अच्छे से उन लोगों ने अपना इलाज भी करवाया. हमने घर में जब शौचालय बनवाया तो उससे हमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने लगी और मुझे सारी समस्याओं से कोई परेशानी नहीं है, अब तकलीफ नहीं है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में शौचालय है. और अभी तो सब सुरक्षित है. हम घर में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सास ससुर सब सुरक्षित है. खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ. एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत. कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत. जाग उठेंगे भाज हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत. जाग उठे